Hello students, are you ready for your board examination for your most favorable subject, that is biology? So today I am presenting over here the certain few frequently asked as well as the most important questions for your biology exam, that is 2024. So we are begin with the chapter number 1. So the first chapter, the total weightage mark, it should be of 9 marks. So some of the important questions, these questions are the internal structure of microsporangium. The question can be asked for 3 marks. ये सबको पता ही है कि ये जो क्वेश्चन है वो frequently एग्जाम में पूछा जाता है. Clear? So it can be asked for 3 marks question, and which is one of the most important question. Second question that we are talking about, the structure of pollen grain with the male gametophyte stage. तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई जो मेल गैमेटोफाइट स्टेज है वो ही इट्स अ पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन. तो यहाँ पे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन करना है अबाउट द मेल गैमेटोफाइट स्टेज, एंड द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट, अगेन जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, वैसे ही द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल विथ डायग्राम. अब काफी बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि ये एनाट्रोपस क्या है. सो इट शुड बी रिटन इन द at the base of diagram, the anatropous ovule, it is nothing but the structure of megasporangium. The same question can be asked for 3 marks question. Okay, now next, the development of female gametophyte stage. Now this question can be asked in the various way. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि development of female gametophyte stage, straight away they will ask the question. उसके अलावा the same question can be asked for the female gametophyte stage. So explain the female gametophyte stage. तो वहां पे भी आपको सेम आंसर ही लिखना है, and the same question can be asked for 3 marks or it can be asked for the 4 marks even also. So the question can be asked for either 3 marks or it should be asked for 4 marks. Now followed by that, embryo sac formation. So embryo sac formation, it is generally been asked for the 3 marks question. तो काफी बार ये questions अभी तक पूछा नहीं गया है, but this year the probability or chances to ask the embryo sac formation, it may be maximized. Next, the pollination and its types. अब सबको पता है कि pollination क्या है और उसके basically जो 3 types है. So they are not asking all the 3 types, but ये 3 में से कोई 2 types वो generally आपको पूछ सकते हैं. And the weightage of the question can be asked for again 3 marks. Second, the pollen pistil interaction. So pollen pistil interaction, again the question can be asked for 3 marks. Followed by the outbreeding devices. अब ये question आपको previous years में पूछा गया है. So outbreeding devices, the question can be asked for 3 marks. अब यही questions को अगर थोड़ा revise करके अगर आपको पूछा जाए, so the question can be asked in this format, like to explain to prevent the process of cell pollination and to encourage the process of cross pollination, which type of devices would be acquired by the plants. So the question can be asked in this format also, but the weightage will remain same, that is either 3 marks. Next, this is the most important questions and frequently been asked in your previous year's exam, board examinations, that is double fertilization. अब डबल फर्टिलाइजेशन को भी अगर वो स्प्लिट्स करके पूछते हैं तो इट कैन बी स्प्लिटेड इनटू द 2 क्वेश्चंस, दैट इज अ ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगैमी. सो अगर पूरा क्वेश्चंस अगर आपको पूछा जाता है तो इट कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. अगर उसको स्प्लिट करके पूछते हैं तो वो क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स में पूछा जाता है. Next, the development of embryo in dicot plant. So generally this is the most important questions, and again this is the frequently asked question in your previous year's exam. That is the development of embryo in dicot plant. तो यहाँ पे अभी आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना होता है. Second, again the last topic, that is polyembryony and apomixis with the suitable examples. The either only polyembryony or apomixis, it can be asked for 2 marks. अगर combinedly अगर आपको पूछा जाता है, so combinedly it can be the weightage for either 3 marks or it can even ask for the 4 marks also. So these are the certain various important as well as the frequently asked questions from the chapter number 1. अब हम बात करेंगे chapter number 2 में.
सो चैप्टर नंबर 2, यहां से आपको पता है कि भाई ये चैप्टर में से आपको मेजोरिटिकली 4 मार्क्स के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं. द टोटल वेटेज ऑफ मार्क्स दैट शुड बी द 9 मार्क्स. अब ये 4 क्वेश्चन तो कंपलसरी सबको करने ही है. दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, the female reproductive system, and the 2 process of gametogenesis, that is spermatogenesis and oogenesis. The question same, अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, so the question can be asked for directly the 4 marks question. अगर यहाँ पे आपको डायग्राम पूछा है इन ब्रैकेट तभी आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, अदरवाइज वी हैव नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम्स. नाउ नेक्स्ट, fertilization and implantation. So the process of fertilization and how it could be implanted, and after that the formation of placenta. तो यहाँ पे questions, 2 questions को merge किया गया है. That is the process of fertilization, that is a separate question, and the placental formation, that is also a separate question. तो ये chapter में से काफी बार 2 questions को merge करके भी आपको पूछा जाता है, and the question can be asked for 4 marks. Second, the structure of mammary gland, which can be asked for 2 marks or sometimes it can be asked for 3 marks also. तो अगर 2 marks में पूछा है, you have no need to draw the diagram. Followed by the structure of sperm, that is also again it can be the important part. It can be asked for 2 marks or even it can ask for 3 marks also. Okay. Followed by the most important question as far as my point of view for this year, that is the menstrual cycle. Sometimes it is also been referred as the uterine cycle. So this is the one of the important question as far as my point of view in the 2024. Now the embryonic development. So the question, it can be asked for 4 marks. And finally the implantation and parturition. तो यहाँ भी जैसे मैंने ये questions आपको बताया, तो फर्टिलाइजेशन एंड प्लेसेंटल फॉर्मेशन की 2 सेपरेट क्वेश्चन को कंबाइन करके 4 मार्क्स में पूछा गया है. सेम वे ओवर हियर आल्सो द 2 डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी क्लब टुगेदर एंड इट विल बी आस्क्ड इन द 4 मार्क्स क्वेश्चन. दैट इज द इम्प्लांटेशन एंड द पार्चुरेशन. अब पार्चुरेशन के बारे में सबको पता है, इट इज कॉमनली called as the childbirth or it can also be called as the labor. So this is about the chapter number 2 and the total weightage of mark is 9 marks. Now next, chapter number 3, which is a very short questions and very short chapter, and the weightage of chapter number 3, that should be the 7 marks. So here you can see the certain methods for the contraceptive methods. The first is of natural methods, physical methods, barrier methods. So these methods can be asked for 2 marks question. Followed by, this is the most important question as far as my point of view, again the IUDs and its types. So here 3 different types of IUDs. So the question can be asked for 3 marks. अगर 3 में से कोई 2 आपको पूछा जाता है तो even the question can be twisted and asked into the 2 marks also. Next, followed by the hormonal method. So the hormonal method is also being asked for 3 marks method. Followed by the most important question as far as my point of view, that is again the what is MTP and in which condition the MTP should be allowed. So here we have to write about in which particular conditions the MTP should be allowed. So give the brief account on the STDs, sexually transmitted diseases. Again the question can be asked for 3 marks. And the most important question, the various ART methods which can be separately being asked. तो यहाँ पे मेजोरिटिकली ये 6 मेथड्स हमें ज्यादातर प्रिपेयर करनी है. That should be a ZIP, zygote intrafallopian transfer, GIPT, gamete intrafallopian transfer, ICSI, intracytoplasmic sperm injection, then ET, embryo transfer, artificial insemination, and in vitro fertilization. So these are the important questions from the chapter number 3. So chapter number 1, 2 and 3, the total weightage, that is the total unit weightage, it is 25 marks. Next, chapter number 4, the weightage of mark, it should be of 9 marks. And this is one of the most important chapter, that is of Mendelian genetics. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सबको आता ही होगा, yes or no, that is a Mendel's monohybrid cross experiment. और ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेंडल्स ने 2 लॉ भी डिराइव किए थे.
the law of segregation, and the law of dominance. Clear? The question can be asked for 4 marks. Same way, the Mendel dihybrid cross experiment. So again, the question can be asked for 4 marks. और dihybrid cross से मेंडल ने एक law derive किया था, that is law of independent assortment. Now, as far as my point of view, for this 2024, the law of incomplete dominance with suitable example, and the question can be asked for 3 marks as well as it can even ask for the 4 marks also. Again, as far as my point of view, in 2024, this is one of the most important question, that is describe the linkage and crossing over with suitable example. Generally, linkage and crossing over, it's a too large writing answer. So here it can be splitted. Either they may be asked about the linkage or it may be asked about the crossing over. अगर आपको linkage पूछा जाता है, you have to write about the cross A, and अगर आपको crossing over पूछा जाता है, तो you have to write about the cross B. Now, the sex determination in humans, that is also been frequently asked in the previous year's exam. Haploid diploid type of sex determination. अब ये क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाइड करके पूछा जाता है. सो दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन. अगर सिंपल फॉर्म में अगर आपको पूछा जाता है, सो एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. क्लियर? सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. अगेन द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर इवन 3 marks or it can be asked even for 4 marks also. Followed by the X-linked recessive Mendelian disorder. तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई 2 तरह के X-linked recessive Mendelian disorder है, that is the color blindness and hemophilia. So it can be asked in this format or straight away it can be asked any particular disease. So you have to give the answer accordingly. Followed by the thalassemia. So this year, according to my point of view, this is also going to be a most IMP question for your 2024. थैलेसेमिया, अगर आपको पता ही है कि भाई 2 टाइप के थैलेसेमिया होते हैं, अल्फा थैलेसेमिया एंड बीटा थैलेसेमिया. नाउ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, तो अब हमें पता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, द होल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 4 marks, बट इट कैन बी स्प्लिटेड इन 2 marks क्वेश्चन. सो हमारे पास टोटल 3 तरह के सिंड्रोम्स है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड इवन टर्नर सिंड्रोम. तो अगर सेपरेटली भी आपको कोई एक सिंड्रोम के बारे में 2 marks के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है. क्लियर? सो दैट इज अबाउट ऑफ द चैप्टर नंबर 4, दैट इज weightage with the marks 9. Now comes to the chapter number 5. So here also the weightage of this chapter number 5 is of 9 marks. Now, the first important question, the salient features of double helix structure, that you all know, the double helical structure is only DNA. तो वहाँ पे DNA की जो properties है उसके बारे में आपको यहाँ पे mention करना है. Second, the question can be asked for 3 marks question. Okay. Now the structure of nucleosome. Clear? तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए आपने जहां पे पढ़ा होगा वहां पे आपने न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है. तो ये जो न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर है, इट कैन बी आस्क्ड फॉर 3 marks क्वेश्चन. यहाँ पे सिर्फ आपको न्यूक्लियोसोम के बारे में लिखना है. Followed by the most important question as far as again my point of view, the Hershey and Chase experiment for bacterial transduction. अब काफी बार स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट एंड ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे हर्शी एंड चीज का जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट और इट इज ऑल्सो बीन रिफर्ड एज द ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट. ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज बीन कैरिड आउट बाय द ग्रिफिथ. Now followed by the 3 processes that you all know. Any one process can be asked in the exam. The first process, that is the DNA replication. So here the DNA replication is a semi-conservative proof with the suitable experiment. तो यहाँ पे मिजल्सन एंड सेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वहाँ पे उन्होंने प्रूव किया था कि DNA replication is nothing but the semi-conservative mode of replication. So the question can be asked for 4 marks question. Same way Hershey and Chase का जो एक्सपेरिमेंट है it can be asked for 4 marks question. Now the transcription unit. The transcription unit, it can be asked for 2 marks or sometimes it may be asked for 3 marks also. Now describe the process of transcription.
अब यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दो डिफरेंट सेल्स में पूछा जाता है. इफ इट इज क्लियरली मेंशन the process of transcription in eukaryotic cell or in prokaryotic cell, so you have to write the answer accordingly, but the question can be asked for 3 marks or even it can ask for the 4 marks also. Now describe the process of protein synthesis. सबको पता ही है कि protein synthesis का जो process है it is also called as the translation. तो यहाँ पे आपको translation के बारे में पूछा जा सकता है और the question can be modified in such a way. Describe the process of protein synthesis. Okay. Define genetic code. तो यहाँ पे आपको genetic code की definition देनी है and write the salient features of genetic code. The question can be asked for 3 marks question. तो यहाँ पे लिखना थोड़ा कम होगा and according to the marks. तो यहाँ पे at least आपको 6 to 7 silent features आपको यहाँ पे mention करने होंगे. According to my point of view, at this exam, explain the gene regulation with the help of lac operon. So this lac operon, it is one of the most important question for 2024 and it can be asked for 4 marks question. Now the two questions that I have been selected to ask for 2 marks question, one is the write a note on polymorphism and second the preparative steps for DNA fingerprinting. So this question can be asked for 2 marks question, polymorphism, and the preparative steps for the DNA fingerprinting can be asked for 3 marks question. So that is all about the chapter number 5 and the total weightage of mark is 9 marks. Now chapter number 6, the weightage of mark is 8 marks. So here you can see ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे इवोल्यूशन के वाले चैप्टर में प्रॉब्लम्स होती है. तो यहाँ पे सर्टेन important questions मैंने सिलेक्ट किए हैं which can be frequently being asked in your previous exam. So here most important question for your 2024, that is of Miller's experiment. The question can be asked for 3 marks. तो जनरली ये चैप्टर में से 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Now the theory of spontaneous generation, theories of spatial creation, तो यहाँ पे सिर्फ आपको theories के statements लिखने हैं and which can be asked for 2 marks question. Now these are the 2 most important questions, homologous organ or divergent evolution and the analogous organ and convergent evolution with suitable example. तो 2 में से कोई एक जनरली एग्जाम में होता ही है, so it can be asked for 3 marks question. Now adaptive radiation with the suitable example, again the question can be asked for 3 marks. तो यहाँ पे आपको पता है कि ये 3 में से जनरली एक क्वेश्चन तो एग्जाम में होता ही है. Now as far as my point of view in 2024, this could be the one of the most important question from this particular chapter, that is Hardy-Weinberg principle. Now the question can be asked from 2 parts. अब जब आपको Hardy-Weinberg principle पूछा जाता है, so at that time you have to write about the principle and derive the equation of p plus q whole square. तो यहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल लिखना है और वो इक्वेशन को डिराइव करना है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे आपको हार्डी-विनबर्ग को जो अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर्स है, वो 5 फैक्टर्स के बारे में लिखना है. सो अगर क्वेश्चंस आपको कौन से फॉर्मेट में पूछा गया है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर लिखना है. फॉलोड बाय द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन. तो मैन के बारे में जो भी हिस्ट्री है स्टार्टिंग फ्रॉम द इवोल्यूशन, तो वो आपको डिराइव यहाँ पे करनी है. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन. Followed by the natural selection with the help of suitable example. तो यहाँ पे आपने एक मॉथ वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, तो ये मॉथ वाला एग्जाम्पल आपको उसकी हेल्प से ये आपको प्रूव करना है द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. सो अगेन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस कुड बी द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. Here I have been selected one question which is generally been avoided by the students and can be asked for 2 marks. अब इस बार क्या है कि आपको जनरलाइज ऑप्शन है, तो बायोलॉजी में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे विच कुड बी द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन. So this could be the one is the unexpected question
दैट इज आर्टिफिशियल इवोल्यूशन। क्लियर? तो ये आपको एक छोटा पैराग्राफ बुक में दिया गया है, सो यू हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड फोकस अबाउट द आर्टिफिशियल evolution. So that is all about chapter number 6. Now followed by the chapter number 7, the total weightage of mark is 8 marks. Now the causative agent, symptoms and the spreading of these are the 3 frequently asked diseases, that is common cold, escheriasis and filariasis. The question can be asked 2 marks question. तो 3 मार्क्स में कॉमन कोल्ड के बारे में आपको पूछा जा सकता है, एस्केरियासिस के बारे में पूछा जा सकता है, या तो फिलेरियासिस के बारे में पूछा जा सकता है। एज यू ऑल नो फिलेरियासिस इज आल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स को आपको ज्यादातर ध्यान में रख के क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट किया जाता है, दैट इज कॉजेटिव एजेंट, फॉलोड बाय सिम्टम्स एंड हाउ द डिजीज कैन बी स्प्रेड, फॉलोड बाय द लाइफ साइकिल ऑफ मैलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम. This is one of the most important question as far as my point of view in 2024, and the question can be asked for even 4 marks. अब बुक में आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, so along with the diagram you have to explain the life cycle of malarial parasite, that is of Plasmodium. Here describe the non-pathogen specific immunity. तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा ट्विस्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है. सिंपल आपको पता है कि नॉन पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इनेट इम्यूनिटी. तो आइदर द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी और इवन द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर नॉन पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. तो यहाँ पे आपको 4 बैरियर्स के बारे में लिखना है. तो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन. नाउ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी विथ डायग्राम. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आता है, सो यू कैन ऑल्सो बी एबल टू गिव द आंसर अबाउट द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. क्लियर? तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस एक साथ आ सकते हैं. द राइट अप इज रिमेन सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एग्जॉस्टेटेड इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एंटीजन. सो दैट इज सिंपली वी कैन कॉल इट द एलर्जी. तो यहाँ पे एलर्जी के बारे में पूछा जा सकता है. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये 2023 में आपको पूछा गया है, सो माइट बी द चांसेस आर बीइंग वेरी लेस टू आस्क और रिपीट इनटू द 2024. नाउ दिस कुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट द नोट ऑन प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स. तो प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स में 2 ऑर्गन्स के बारे में अब यहाँ पे आपको लिखना है, दैट यू ऑल नो, दैट इज ऑफ बोन मैरो एंड थाइमस. तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स और इट कैन इवन आस्क फॉर 4 मार्क्स ऑल्सो. फॉलोड बाय डिस्क्राइब द रेप्लिकेशन ऑफ रिट्रोवायरस. अब काफी बार स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है कि भाई व्हाट इज द रेप्लिकेशन ऑफ रिट्रोवायरस. तो यहाँ पे हमें लिखना है द रेप्लिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ HIV वायरस. तो ज्यादातर बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम के एग्जैक्ट नीचे लिखा हुआ है, दैट इज द रेप्लिकेशन ऑफ रिट्रोवायरस. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर इवन 3 or 4 मार्क्स क्वेश्चन. फॉलोड बाय डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेटाजेनेसिस, दैट इज द स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर विद इन द बॉडी. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन. सेम वे यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ट्यूमर एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स आर देयर. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. नेक्स्ट, डिटेक्शन, डायग्नोज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. As far as my point of view, this could be the one of the important question in your 2024, and the question can be asked for 4 marks question. Followed by the cannabinoids and the sources and its effects. So कौन कौन से cannabinoids है, उनके sources क्या है, and what is the effect of this cannabinoid. Generally question can be formulated or asked in the multiple choice question, but काफी बार आपको theory में पूछा जा सकता है, and the weightage can be asked for 3 marks question. Now followed by the certain 2 marks question, because precise writing यहाँ पे आपको लिखना होता है. So what is the withdrawal syndrome? तो काफी बार स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ना भूल जाते हैं, but the question can be asked for 2 marks. तो सेपरेटली बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है about the withdrawal syndrome. Followed by the side effects of steroids in case of male as well as in case of female. तो ये भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में सेपरेटली पूछा जा सकता है कि what are the side effects of steroid in male
and the question can be asked the side effects of steroid in female also. तो ये दो क्वेश्चन स्प्लिट करके आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. Now comes to the chapter number 8, that is weightage of mark is of 7 marks. So here we can see the use of microbe in beverage industry. तो beverage industry में microbes का क्या uses है, that we are going to ask. The question can be asked for 2 marks question. Next, mention the bioactive molecules with its importance. अब यहाँ पे हमें पता है कि 3 तरह के बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, तो वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो बायोमॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन. फॉलोड बाय द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ STPs, द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, अगर पूरा क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है, इट कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. और इवन स्प्लिट करके पूछा जाए तो भाई STPs में हमें पता है कि भाई 2 तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सो द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स. तो यहाँ पे द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स और इवन सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स ऑल्सो. Followed by the microbes as biocontrol agent. According to my point of view, this is also one of the important question for 2024, that is microbes as biocontrol agents. Followed by biofertilizers, microbes used in biogas production and the microbes used in household purposes. तो ये दो questions ऐसे हैं बच्चों कि आप कोई भी आंसर्स यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हो. That is not much of examples in the household purposes. So the question can be asked for 3 marks questions. So that is all about chapter number 8. Now comes to the chapter number 9 and 10 combinedly. That is the area of biotechnology and the weightage of 8+8. It means ये यूनिट का जो टोटल वेटेज है वो हमारा 16 मार्क का वेटेज है. Here the principle of biotechnology. तो सिंपली यहाँ पे हमें 2 प्रिंसिपल है, 2 प्रिंसिपल के बारे में ही लिखना है, उनके 2 स्टेटमेंट ही लिखना है. सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन. Write a note on restriction enzyme. This could be the one of the most important question and frequently asked question in the previous board examination. And the question can be asked for 3 marks. Sometime it can be asked for 4 marks also. Followed by separation and isolation of DNA fragments with the help of agarose gel electrophoresis. So here gel electrophoresis, the question can be asked for 3 marks question. Now comes to the selectable marker and the cloning sites in PBR 322. अब ये क्वेश्चंस आपको 2023 में पूछा गया था, तो इस बार पूरा का पूरा क्वेश्चंस अगर आपको पूछा जा सकता है और इट कैन नॉट बी आस्क्ड. नाउ नेक्स्ट, मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट विद द सूटेबल मेथड्स. तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 मेथड्स है कि वहाँ पे होस्ट को कॉम्पिटेंट किया जाता है टू रिसीव द RDNA. सो दिस वेरियस मेथड द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन. Followed by, this is one of the most important question as far as my point of view, that is amplification of gene. So, amplification of gene with the help of PCR, polymerase chain reaction. तो यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ भी पूछा जा सकता है. The question can be asked for 3 marks. Sometime it can be asked for 4 marks also. Followed by the write a note on bioreactors. तो यहाँ पे 2 तरह के reactors होते हैं. क्लियर, तो वो रिएक्टर्स के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. फॉलोड बाय द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. वेरी शॉर्ट पैराग्राफ इज टू बी गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. अब यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक ऐड किया था, वो डिलीटेड चैप्टर्स में से ऐड किया था, दैट इज अबाउट ऑफ टिश्यू कल्चर. So the same most important question for the 2024, write a note on tissue culture, and the question can be asked for 4 marks. Now, how genetically modified insulin is to be formed? That is genetically engineered insulin, which can be asked for
4 marks. Now transgenic animals, the importance of transgenic animals, हमें पता है कि various importance have been given, the various significance of transgenic animal is given in the text, but वो particularly point out करके आपको separately पूछ सकते हैं, and it can be asked for 2 or 3 marks question. And last but not the least, that is explain the biopiracy. तो ये टॉपिक आप अपने तरीके से अपने आप भी आंसर में लिख सकते हो. So the question can be asked for 3 marks question. So that is about of the बायोटेक्नोलॉजी यूनिट कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये यूनिट में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इतने क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, सो यू डोंट वरी अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी यूनिट. नाउ लास्ट वन, हमारा जो लास्ट यूनिट है, दैट इज चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13. द वेटेज ऑफ द चैप्टर इज अबाउट 18 marks. 666. So the total weightage of last 3 chapters and the last unit of ecology, that is total 18 marks chapter. तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर बच्चे ये क्वेश्चंस को प्रीफर्ड कम करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको ज़्यादातर यही चैप्टर पर फोकस करना चाहिए कि यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स ओवर हियर. सो फर्स्ट वन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ. तो हमें पता है कि 4 फैक्टर्स जो है विच कैन अफेक्ट्स द पॉपुलेशन ग्रोथ. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर द 3 marks क्वेश्चन. अगर आपको सिर्फ फैक्टर्स ही लिखने हैं, इवन द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 2 marks ऑल्सो. नाउ एज फार एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस ईयर गोइंग टू बी द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, which is one of the most important question. The question can be asked for 3 or even it can be asked for the 4 marks also. Followed by the population interaction. तो population interaction में predation, commensalism and parasitism. So according to my point of view, predation and parasitism, it is one of the most important question for the 2024 board examination. Again, the question can be asked for 3 marks or it can be even asked for 4 marks also. Second, the productivity and its types. तो ये भी आपको बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पूछा जा सकता है. That is of productivity and its type. Sorry, it is asking the question from the ecosystem. So this could be the ask for 3 marks question. Followed by write a note on decomposition. So this also one of the most important question, that is of decomposition. तो टोटल वहाँ पे आपको 5 मेथड्स जो है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. नाउ फूड चेन एंड द टाइप्स ऑफ फूड चेन. तो हमें पता है कि व्हाट इज फूड चेन, और फूड चेन के 2 टाइप्स है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन. तो उसके बारे में आपको लिखना है. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 2 marks क्वेश्चन. Now describe the various ecological pyramids. This is one of the most important questions and frequently asked question for the 4 marks question. So various ecological pyramids. तो यहाँ पे 3 तरह के pyramids है, as you all know. Now the biodiversity and the types of biodiversity. यहाँ पे हमें पता है कि विल्सन ने 3 टाइप्स लिए थे. That should be the types of biodiversity. The question can be asked for 3 marks question. Followed by the most important question as far as my point of view, that is species area relationship. जो वॉन हम्बोल्ट ने प्रिंसिपल दिया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का. सो लिखना यहाँ पे बहुत कम है, ग्राफ ड्रॉ करना है and you can get the 4 out of 4 marks. So the question can be asked for 4 marks. Next, causes of biodiversity loss. तो यहाँ पे एविल क्वाड्रेट के नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन, द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस. तो वहाँ पे 4 मेजर एरिया हमें दिए गए हैं, 4 फैक्टर्स दिए गए हैं, 4 टाइप्स दिए गए हैं. तो उनमें से फ्रिक्वेंटली किसी एक को स्पेसिफिकली जनरली पूछा जा सकता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दिस 4, दैट इज फ्रेगमेंटेशन एंड द एलियन स्पीसीज इन्वेजन. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 3 marks क्वेश्चन.
नाउ ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन रखा है, द नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। द क्वेश्चन कैन बी आस्क फॉर 2 मार्क्स। तो मैंने बोला है प्रीवियसली आपको कि ये बार कि मैक्सिमम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे विच कुड बी द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन विच कुड बी आस्क फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन. Write the brief note on in situ conservation. This is one of the most important questions and can be asked for the 4 marks question. तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के कंजर्वेशन है, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन. तो जनरली इन सीटू कंजर्वेशन में मेथड्स थोड़े बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत लिखना होता है, सो दैट्स व्हाई इट कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन. नाउ दिस वन, द रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस. This could be the ask for 3 marks question, and in previous years the same question can be asked for even 4 marks also. तो यहाँ पे भी आपको एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल लिखना है, and with the very small paragraph you can get 3 of 3 and 4 of 4. Now last one, same way जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, that is the unexpected question or differently asked question, that is pseudo copulation as well as the resource pardoning. So these are the 2 questions which can be asked for 2 marks. So these are the important questions from the chapter number 11, 12 and 13. So guys, so these are the most frequently and important questions which could be going to be asked in or 2024. So wish you all the best for your board exam. If you like the video and want to watch more, please like and subscribe the channel for more updates.